हेलो दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे नवोदय क्लास 9 का नंबर 16 का पीवाईक्यू जो कि रहेगा 50 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहला वाला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 1, बिना में सही आंसर। दूसरा हमें पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। Which of the following is the smallest prime number? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो कि जिसका टू फैक्टर है अपने आप से और एक वन से। इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू से स्टार्ट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसमें से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा नंबर सी। पाई इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ नंबर। पाई किस तरह का एग्जांपल है? ये रेशनल होता है पाई। नंबर 22/7 ये किस तरह का है? रेशनल नंबर, ये इंटीजर, सी रेशनल नंबर, ये होल नंबर। ये पी बाई क्यू का फॉर्म में रेशनल नंबर इंटीजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ए रेशनल नंबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इसका हो जाएगा 0। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी माइनस बी बाई ए हो जाएगा इसका। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी माइनस ए बाई बी हो जाएगा। How many rational numbers are there between two given numbers? Infinity हो जाएगा। Every integer is a rational number. प्रत्येक इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। रूट टू इज एन रेशनल नंबर। वो टेन में पढ़ेंगे अच्छे से। रूट टू को प्रूव करने वाला है रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग recurring. Question number 15 the decimal expansion of an irrational number is a non-terminating and non-recurring. Find the value of 2 का power 0 plus 2 का power 3 का power 0 into 4 का power 0। तो जानते हैं कि 1 का पावर कोई किसी भी अगर नंबर का पावर 0 होता है तो 1 होता है। 1 plus 1 into 1 तो 2 into 1 is equal to 2। ऑप्शन नंबर सी। The value of 3 का power 3/4 का power 0 तो 1 हो जाएगा। According to the laws of exponents मल्टीप्लिकेशन में x का पावर अगर बेस सेम हो तो अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है। m प्लस n नंबर बी। 19 पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो गया तो डिवाइड में माइनस होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर ब्रैकेट के बाहर किसी का पावर है तो उसे मल्टीप्लाई हो जाती है और एन एन टी का पावर एन इंटू एन ऊपर में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है सी। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये 2 का निकलेगा या 3 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, ये नहीं निकलेगा किसी। तो नंबर ये हो जाएगा एक्सप्रेस 0.333 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो 1/3 आंसर हो जाएगा। 23 the rationalizing factor of 1 by root a 1 by root a into minus into root a by 1 कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा the value of a का पावर 0 by a is not equal to 0 obviously 1। So this number the negative of a negative rational number is always positive। The negative of a negative rational number is always positive। The product of a non-zero rational number and a rational number is the product of a non-zero rational number and an irrational number is always irrational। What is the HCF? Highest common factor two consecutive natural number 1। What is the LCM
अब टू को प्राइम नंबर एक प्रोडक्ट. If a number is divisible by both 2 and 3, it must also be divisible by 6. 2 और 3 का 6 करने के लिए मतलब अगर अगर किसी में कोई नंबर अगर 6 डिवाइड जा रहा है तो वो ऑब्वियसली 2 और 3 से ही जाना चाहिए क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आता है. डीपली पढ़ना है तो ये बस हम प्रैक्टिस के लिए होता है. 30 number question. The sum of two irrational number is the sum of two irrational number. Root 2, root 3. But maybe irrational भी हो सकते हैं क्योंकि रूट टू प्लस रूट टू होगा तो इस यहाँ पे रूट टू. The multiplicative inverse of minus 1 होगा. 32. The inverse of minus 5 by 9. 5 by 9 हो जाएगा. What is the absolute value of minus 15? 15 हो जाएगा. The standard form of 36 by minus 24 is 36, 24, 6, 24, 6, 36, 2, 3, 3 by 2, minus 3 by 2. The rational number between 1 by 2 and 1 by 3 is 5 by 2. The value of 2 upon minus 3, minus 8, minus 1 by 8. 2 upon minus 3 was 1 by 2 का power 3 हो गया 1 by 8 हो जाएगा. मैं इनवर्स करने चला मेरे को 18 हो जाता है. 37. All the following fraction has a terminating decimal extension number 8. The number 1.232323 इसका मतलब रिपीटिंग हो रहा है 1.23 के ऊपर बार है. ठीक है. रेशनल नंबर. क्वेश्चन 39 पूछ रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 1 से लेके 10 तक मतलब 10 होगा पूछ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक पूछ रहा है. इसका आंसर है 55. Is every whole number is a rational number? No. Every whole number is natural number 1 से whole number 0 से शुरू होता है तो natural number और 0 से शुरू होता है अलग. 41 पूछ रहा है which of the following is the only even prime number. तो हो जाएगा how many prime numbers are there between 1 and 100? 25. Which is the smallest three-digit prime number? 0. What is the difference between the place value and the face value of 5 and 6, 5, 4, 6? Answer is 9, 4, 9, 5. Question 45. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 3 to 3 9 में दिया हुआ था. आंसर 9 में होगा. The value of 25 का हाफ 25 5. हाफ मतलब होता है तो कार्ड में अगर 1/2 होता है इसका रूट नहीं जाता इसका मतलब रूट होता है 5 को. 47 पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 64 का पावर 1 64 का रूट 3 तो इसका 4 होता है. और any digit of the square of the number is 4. any digit मतलब आखिरी का अंक पूछ रहा है तो 4 है 2 3 4 का any digit 4. 49 बोल रहा है which of the following is the smallest fraction? 1 by 5. तो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का. The value of 116 plus 109 is equal to 4 plus 3 7. 7. आज कंप्लीट हो गया. थैंक यू दोस्तों. सब्सक्राइब कर लीजिए.